Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, please allow us to rename our. नहीं बेटा, sorry, I cannot allow you to rename. ठीक है? किसको चेंज करना है नाम अपना? I want to change. नाम बताओ. Urvashi. उर्वशी. अभी आप किस नाम से हैं मीटिंग में? Arush Nangwal. कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो. ठीक है? Okay, sir. Okay, so can you tell me till which exercise or which chapter Gaurav sir has already done with you in your class? Sir, we are on exercise 1D, question number 2. Exercise 1B. D. D, fourth exercise. Am I right? Fourth exercise. बताओ बेटा. Okay, can you send me the? Okay. Yes, sir. Okay, can you send me the picture of exercise 1D? Can you send book से एक photograph लेकर के मुझे WhatsApp पे send कर दो कोई picture. Sir, कौन सी exercise? 1D जो exercise आप कर रहे हैं अभी. Can you send a photograph of it to me on WhatsApp? फोर्थ एक्सरसाइज जो है आपकी 1D, उसकी एक फोटो सेंड कर दो. Sir, today we will start question number 4 of exercise 1D. ओके. Excuse me, sir. यस मंदिनी. Sir, we were on 1D, question 1. ओके 1D क्वेश्चन 1. Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. आई विल स्टार्ट द फोर्थ एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके. इज देयर एनीवन हु इज सेंडिंग द पिक्चर? No, sir. We have done question. We have to start question number 2. आप लोगों ने ग्रुप पे सेंड कर दिए. ठीक है, कोई बात नहीं. इट्स ओके. Okay, so exercise 1D is about multiplying rational numbers. Rational numbers आपका तो clear है? What are rational numbers? Yes, sir. Yes, sir, clear. Clear है? Yes, sir. बताएगा कोई बच्चा क्या होते हैं rational numbers? Sir, rational numbers are the numbers which are in the form of A upon B, where A and B are integer, but B is not. Very good. ये तो definition हो गई. इसमें आपको मतलब समझ में आता है? अगर if I ask you one or two examples में अगर यहाँ पर पूछता हूँ आपसे, will you be able to identify whether the number I am asking is a rational number or not? ये आप बता सकते हैं? Yes, sir, I can tell. Very good. चलिए आइए मैं पूछता हूँ, फिर 2-3 नंबर्स मैं पूछता हूँ कि ये रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है. ठीक है? Okay, sir. हाँ जी बेटा, बोर्ड बताना जरा सही. Excuse me, sir. Yes. Sir, Gaurav sir said it to try question number 2. और सेट टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है? हम लोग Sir, Ahuja sir said that he will do in the class question number 2 and we have to try also. कोई बात नहीं. हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर नहीं. एक्सरसाइज 1D जो है वो आपकी स्टार्टिंग से करेंगे. ठीक है? फाइन. चलो, यू कैन सी द बोर्ड.
Yes, sir. चलो देखो, I am writing a few numbers here and you have to tell me whether these numbers are rational numbers or not. Okay? Excuse me, sir. Yes. Sir, from now you will teach us maths. अब बेटा फिलहाल तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आगे कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले का कोई भरोसा Okay. नहीं कि कब तक मैं यहाँ पर नहीं, मतलब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? सही बात है। मतलब मैं इस दुनिया में रहता हूँ। Just joking. Yes, I will be teaching you that I am not sure to come back. Okay. So 3/5, this number is a rational number or not? Yeah. Sir, it is. Yes, sir. Sir, it is. Can you give me the reason why? Can you give me the reason why it is a rational number? बता सकते हो क्यों ये रेशनल नंबर? Sir, because it is in the form Sir, of because in 5. sir, because it is in the form of A upon B. Very good. It is in the form A upon B. बहुत अच्छे. Where A and B are? Where A and B are? Integer. 3/5. अच्छा, A की वैल्यू यहाँ पर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं what is the value of A in this number? 3. Very good. What is the value of B in this number? 5. 5. So 3 is an integer, am I right? Yes, sir. Yes, sir. And 5 is also an integer. ये बात सही है? Yes, sir. So yes, it is a rational number. But A upon B की form में है. Where A, the numerator is an integer, and B, the denominator is also an integer, then it is a rational number. Okay, very good. चलो एक और लिख रहा हूँ, you have to calculate this is a rational number. 2.73. Is this a rational number? Yes, sir. It is a rational number. It is a rational number. Yes, sir. अच्छा. बाकी बच्चे सबका यही आंसर है क्या ये रेशनल नंबर? No, sir, it is not a rational number. अच्छा. और कुछ? No, sir, not a rational number. The rational number. बाकी तो who was saying that it is a rational number? कौन कह रहा था? मनीना? Yes, sir. बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? It is not a rational number. It is not a rational number. Very good. और बाकी बच्चे? बस दो ही बच्चे बोलेंगे, 3. Sir, is a rational number. अक्षर? Sir, rational number है. It is a rational number. Yes, sir. Anyone else? नाम लेकर के पूछूं? चलो राज बताएंगे. राज, गुड मॉर्निंग. Sir, it is the rational number. So I said no, no, it's not. राज बेटा बताओ. Is it a It's a rational rational number? number. Not a rational number. आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउड बोलो. Sir, it's should not I a tell? rational number. Sir, should I tell why it is a rational मनीना, number? मनीना एक मिनट बेटा, बस अभी आपसे पूछता हूँ, बस एक मिनट. हाँ राज बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो. So it's not, for me, it's not a rational number. It is not a rational number. Okay. Sir, every teacher says that. Mandeena, I can you? Okay. So, Mandeena, can you tell why are you saying that it is a rational number? How you can say that it is a rational number? Sir, because it can be written in the form of A upon B also. We can write this in the form A upon B. कैसे? Sir, telling. So you please correct our guess. Can we write this number in the form A upon B? Yes, we can write the number in the form A upon B by this method. Yes, sir. Can we write the number like this? Yes, sir. ये और ये एक ही बात है या अलग बात है? सेम चीज है? So it is same. The cheese. same. Yes. So Sir, we same say चीज. 3/100. Is it in the form A upon B now?
Yes, sir. Yes, sir. 373, it is an integer. 373 is an integer. And 100, the denominator, is also an integer. So whenever numerator and denominator both are integers, can we say that it is a rational number? Yes, we can say that the number is a rational number. Yes, sir. Just for all of you. Okay, can you tell whether this is a rational number or not? Is this a rational No, number? sir. Sir, it is not a rational number. It is not a rational number. और कोई बच्चा कोई इस बार कोई ऐसा बोल रहा है कि this is a rational number, कोई बोल रहा है? Anyone with a different answer? सब यही मान गए कि it is not a rational number. Yes, sir. And if I tell you that yes, it is also a rational number, Sir, we can write it like 0.1, but we can't write it like 1/0. 0/1, can we write 0 as 0/1 or 0/2 or 0/5? कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको. 0 divided by any number is equal to 0 only. क्या यहाँ पर जो न्यूमरेटर में लिखा है 0? 0 एक इंटीजर होता है. 0 is an integer or not? Yes, sir. It is an Yes, integer. sir, it is an integer. The denominator 1, it is also an integer. Numerator may be integer, denominator may be integer. That means yes, it is a rational number. Yes, it is a rational number. Understood or not? Yes, sir. Yes. Okay. So can you give an example of a number which is not a rational number? आप कोई example दे सकते हैं ऐसे कोई 1/0. 1/0 अब क्या बोला है? Is this a rational number? बताइए सारे बच्चे. Is this a Sir, rational it is number? not a rational number. No, sir. No, it is not a rational number. Can you give the reason? Sir, because 1/0 is only 1 and 1 is a whole number. So this is not in the form of rational number.
I'm sorry, there was an urgent call. Anji, so yes, this is not a rational number. Your answer is correct because 0 in the denominator, any number when divided by 0, यहाँ पर 0 से divide कर रहे हैं 1 को, right? यहाँ पर 1 को हम क्या कर रहे हैं 0 से divide, सही बोल रहा हूँ मैं या नहीं? All of you. Yes, sir. So whenever a number is divided by 0, the number is not defined. This number is not defined. इसको हम rational number नहीं बोल सकते. इसकी कोई definition नहीं हो सकती. Okay. You cannot define a number where the denominator is 0. Okay. Fine. Understood all of you rational numbers क्या होते हैं? So Yes, sir. I understood. you have already done till exercise you have already done till exercise 1C. Now you have started exercise 1D. In exercise 1D, you have to find the product of the numbers. Rational numbers को कैसे multiply करते हैं ये सीखना है आपको. So first part of question 1 we will do of exercise 1D. So let's start. Excuse me, sir. There is no register here. There is no register in the class. Let's do question 1 of exercise 1. Question 1 first part. You have to multiply 3 upon 5 by minus 7 upon 8. 3 upon 5 multiplied by minus 7 upon 3 upon 5 multiplied by minus 7 upon 8. ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं दिख रहा है आप लोगों को? Is it visible? दिख रहा है ना? बताओ बेटा. 3 upon 5 multiplied by minus 7 upon 8. When you Sir, should I solve this question? yes. So I have solved. Rational numbers, you have to multiply the numerators of the two rational numbers. 3 into minus 7 is minus 21. And 5 into 8 is equals to 40. Your answer is minus 21 upon 40. Understood? Very easy. Yes, sir. Let's do the sixth part. मैं सारे नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर. Only the selected ones we will discuss here. सर मैंने सारे कर. कोई बात नहीं, आपने सारे कर लिए, अच्छी बात है. ठीक है, वेरी गुड. Let's do the sixth part. Sixth part of the question: 25 upon minus 9 multiplied by 3 upon minus 10. 25 upon minus 9 multiplied by 3 upon minus 10. तो first of all, आपने यहाँ पर ये देखना है क्या मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या नहीं. 25 and 10, तो numbers 5 से divide हो 16 divide by 5. मैं बचा तो यहाँ पर 5 से divide किया minus 2. Similarly, minus 9 को 3 से काटने से 3 को 3 से काट देंगे बचेगा 1. Okay. So now 5 into 1 is 5 and minus 3 into minus 2 is equal to plus 6. So 5 upon 6 is the answer. 5 upon 6, positive answer. 5 upon 6. Understood? Yes, sir. Can you all do the
do the 10th and 11th part of this question. 10th or 11th part करेंगे. बेटा, करो. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next question. Have you all done both the parts? दोनों कर लिए? Yes. 10th and 11th part. Have you all done? Yes, sir. Okay. So question 2 में we just have to verify that LHS is equal to RHS or not. Actually property होती है in multiplication. You can multiply in any order आपने पहले भी सीखा होगा. Can you tell me what is 3 into 4? बताओ 3 multiplied by 4 क्या होता है? So 12. Yes. And what is 4 multiplied by 3? So 12. 12 होगी. चाहे 3 into 4 करो या 4 into 3 कर लो, दोनों तरफ से आंसर आपका 12 आता है. So same property is applicable in case of rational numbers also. Either you multiply the first number by second number or second number by first number. The answer will be same. Okay. So that is what we have to verify.
लॉ को क्या बुलाते हैं? डू यू नो द नेम ऑफ दिस लॉ? दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. व्हाट डू वी कॉल दिस? Commutative law. Yes, very good. This is known as commutative law. So, आइए देखिए. Question 2 first part. Okay, so we are going to solve LHS separately and RHS separately. LHS is 3 upon 7 into minus 5 upon 9. 3 upon 7 multiplied by 3 upon 7 Minus 5 multiplied upon by 9. 5 upon 9. So here 3 और 9 के बाद देखिए यहाँ पे सवाल 1 minus 0 is 21. So LHS is equal to minus 5 upon 21, and now RHS. What is the RHS? RHS is minus 5 upon 9 into 3 upon 7. Same वही हो जाएगा. Minus 5 into 1 is minus 5. 3 into 7 is 21. Again, the answer is minus 5 upon 21. Can we say that the answer is same in both the cases? Yes. So in the last Yes, unit, the answer is hence verified. Understood the question, all of you? yes, understood. Can you do the third part of the question? Third part करके आंसर लिखो जल्दी से. Write the answer of the third part of the question. Sir, third part minus 12 upon 5 वाला. Third part करो. Minus 12 upon 5 multiplied by 7 upon minus 36. ये वाला करो. LHS and RHS दोनों सॉल्व करिए और वेरीफाई कराइए सेम आ रहा है या नहीं. Sir, done. Very good. चलिए let's move on to question number 3. Question 3 में हमसे यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करवाएंगे. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एसोसिएटिव लॉ कोई बता दो. Yeah, I hope you all have done the third part of question 2. Done. Question number 3. First part. So before starting this, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि what is the meaning of associative law. Meaning क्या होता है? Associative law ये होता है कि A into B into C
equal to A into B into C. क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इसमें दोनों चीजों में? What is the difference? Sir, just the difference of bracket. Yes, there is a difference of brackets. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर वाली चीज से मल्टीप्लाई करना है. सो इधर क्या करेंगे, पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे. मैं ये समझा रहा हूँ, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म, लिखना नहीं है बहुत, जस्ट टू एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो B और C का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट केस. और आर केस में क्या लिख रहे हैं, पहले A और B को मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम होगा. ओके, लेट्स टेक एन आंसर. मैं आपको सॉरी एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं. 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5 कितना हुआ, 3 into 20 क्या आया, 60. चाहे आप ऐसे कर लेंगे. दूसरा तरीका क्या है, यू कैन डू लाइक दिस आल्सो. 3 into 4 को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 into 4 पहले and then multiply by 5. 3 into 4 is 12. 12 into 5, that's equal to 60. 12 into 5 is again equal to 60. So either you do it in this manner or you do it in this manner. The answer will be same. Is it clear? तो ये just मैंने example दिया. You don't have to write this in your copies. Copy मैंने लिखना है. First of all, you tell me, have you all understood? ये क्या मतलब है? Yes, sir, understood.